हाल ही में रशिया के शहर काजान में ब्रिक्स समिट अपने इख्तिताम को पहुंची और इजिप्ट, ईरान, यहां तक कि इथियोपिया को भी दावत दी गई। वो ब्रिक्स का जो एक ब्लॉक इमर्ज हो रहा है साउथ का, कह लें ग्लोबल साउथ में, उसको ज्वाइन करने की। पाकिस्तान, जिसने अपनी उम्मीदें लगाई हुई थी कि जी शायद चाइना या रशिया उसकी हिमायत करेंगे ज्वाइन करने के लिए, दोनों ने माजरत कर ली और इंडिया इन दोनों के साथ आके अब खड़ा हो गया है बड़े वाजे तौर पे भी एक अमेरिकन ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर के अगेंस्ट, आप समझ लें, क्योंकि क्वाड में भी था इंडिया और अब क्वाड में भी मौजूद है, मगर अपने आप को ज्यादा वो ब्रिक्स के साथ उन ममालिक ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और अब इसके अंदर यूएई भी होगा, जिस तरह मैं जिक्र कर रहा था इजिप्ट या मिस्र और इथियोपिया की भी शमूलियत मुमकिन है। पाकिस्तान की क्यों नहीं? इस पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जावेद हसन साहब। ही इज अ बिजनेस लीडर विद ओवर 30 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मेनी डिफरेंट थिंग्स। आप इनका बायो देख सकते हैं जाके, और हमें पाकिस्तान से ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो क्या हुआ जावेद साहब कि पाकिस्तान नामुमकिन यानी फेल्ड इन एसेंस टू जॉइन द ब्रिक्स? Ali, thank you very much for having me on your program as first. It's a pleasure talking to you. मगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये ब्रिक्स की, इट्स अ बिग डिसअपॉइंटमेंट। यहाँ एक्सपेक्टेशन थी कि इनवाइट होगा पाकिस्तान इस दफ़ा, if not to become a member immediately, but to become a member in a year or so. But that hasn't happened. और ये बड़ा एक disappointing event था. And I think it's largely because nobody really sees us as a really important economic partner right now. We are seen as one of those countries that are in economic perennially, I mean, मतलब कि हमेशा कोई ना कोई इकोनॉमिक डिफिकल्टीज में रहते हैं। इकोनॉमिक डिफिकल्टीज में तो रहते ही है, मगर कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं है इस मुल्क में। तो ये दोनों मिला के हम लोग को कोई खास अहमियत नहीं मिलती है। अगर हम देखें, हमारी जो इंटरनेशनल स्टैचर है वो काफी हद तक अब कम हो गई है। अब पैलेस्टाइन पर भी बात करते हैं तो हर दूसरे, इवन नाइजीरिया जो फुल्ली मुस्लिम कंट्री नहीं है, उसको भी बुलाया जाता है। चले, यहाँ तो लाइट चली गई। ये भी एक मेटाफोर है, ये भी मेटाफोर है। वील कंटिन्यू दिस। आप हाँ, अपना अगर लाइट जलाना चाह रहे हैं, कोई आपके पास अपना फ्लैश लाइट है तो वो जला लें, तो एक मगर सेकेंड ये आप ये, इलेक्ट्रिस मगर आई एम सो सॉरी अबाउट दिस, No, मगर no, don't be sorry. Don't be sorry. This is ये perfect. Yeah, the fact ये that your तो computer and your पाकिस्तान है, laptop is मगर working, this is हाँ। great. This is excellent for our audience के ये बिजली का बहरान क्या चल रहा है भाई आपके मुल्क के अंदर? तो ये यहाँ बहरान चलता रहता है। Despite having surplus generative capacity, we have regular blackouts, even in the capital city, in the heart of the country. And this is probably one of the most important uh, uh, red zone में effectively मैं रहता हूँ, और यहाँ लाइट चली गई। तो really it's a reflection हमारी जो difficulties हैं इकोनॉमी में। और आप जानते हैं, जब आप असेंडेंट नहीं होते और आपको हर हर शख्स, आप जिससे भी मिलते हैं आप उससे पैसे मांगते हैं, तो वो लोग दूर भागते हैं आपसे। सो पाकिस्तान, एनी टाइम इट गोज टू सी एनी कंट्री, effectively they expect you that you'll be asking for some money or या some बट loan. पाकिस्तान के अंदर तो एक सोलर रूफटॉप सोलर पैनल रेवोल्यूशन आ रही थी, जावेद साहब। हाँ, मेरे यहाँ भी सोलर लगा हुआ है, मगर बैटरी नहीं है, तो ये अभी लाइट नहीं चल रही। मगर फ्रैंकली स्पीकिंग, दैट इज एग्जैक्टली अ प्रॉब्लम एज वेल, इसलिए कि सोलर लोग लगा रहे हैं और नेशनल ग्रिड में आपके पास ओवर कैपेसिटी है। तो लेट्स जस्ट फॉर अ सेकंड स्टिक टू ब्रेक, इसलिए कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, इट बेसिकली इज अ रिफ्लेक्शन के वी आर नॉट सीन एज एन इम्पोर्टेंट economic player, and that's important, but we're not also seen as a very important geostrategic player. अगर हमारी ईदर में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होती, तो हम लोग को जरूर किसी ना किसी सूरत से ये कंट्रीज इनवाइट। एंड मुझे जहां तक आज मैं पढ़ रहा था कि इट्स नॉट इंडियाज हैंडी वर्क कि हम लोग रिजेक्ट हुए हैं ना, यस। अभी नहीं इनवाइट हुए हैं। It is apparently a friendly country. I'm not too sure which friendly country was that this has been delayed. Now there can be a lot of guesswork, but one of the things that
is also emerging. Okay, we are not seen by one of our most important friendly nations, and I'm not going to name that nation, but we are no longer seen as a reliable partner. पिछले 2-3 साल में जो हुआ है उसके वजह से हमारी जो बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप्स है उसमें भी जरा सा शिकन आया है अभी एंड हाल ही में दैट आपकी अभी हाल ही में आपकी एससीओ आप जिक्र प्लीज पे बात करते हैं, आगे बढ़ाते हैं बात, मगर हाल ही में एससीओ समिट हुई आपकी इस्लामाबाद के अंदर। पूरा कंटेनर सिटी थी। चाइना आपका एक बहुत अहम पार्टनर है, वो यहाँ पे आए। हिंदुस्तान से भी आपके जयशंकर साहब आए। रशियन प्रेसिडेंट भी यहाँ पे मौजूद आपके कैपिटल में पहुंचे। मगर उसका भी कुछ, जैसे आप कह रहे हैं, कुछ निकला नहीं, यानी कुछ बना नहीं, और चीजें देखिए वहां की वहां ही यानी स्लाइड होती गई। अली, एक तो बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हुआ कुछ दिनों पहले उससे जो चाइनीज प्रीमियर थे उनके आने से पहले एक एक्सप्लोजन हुआ कराची में जिसमें 2 चाइनीज इंजीनियर्स का हादसा हो गया। दैट वाज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट। उसके वजह से जो ऑलरेडी मूड डैम्पन हो गया, जो जो होना था, काफी सारे एमओयूज के बारे में बात करा जा रहा था, एंड जो बायलैटरल डिस्कशंस हुई, और जहां तक मुझे पता है ज्यादा कोई खास एमओयूज नहीं साइन हुई विद द चाइनीज। ऑल दैट वाज रियली डिस्कस्ड on the agenda was security of the Chinese personnel in Pakistan. So uh, we have our relationship has been affected by हमारे internal uh, incoherence of ideas, of हमारी incoherence of trajectory। हम लोग की क्लैरिटी नहीं है कि किस तरफ जा रहे हैं एज अ नेशन। तो these things have very very strong impact in terms of your foreign relationships and your demand। एक बंदा जो खड़ा हुआ होता है और कॉन्फिडेंट लगता है और क्लैरिटी होती है, डायरेक्शन होता है, everyone is attracted to that such a entity। We seem not to have those qualities to the external players, and that is affecting our international standing, and that is reflecting in the fact that we didn't get a BRIC membership। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, it's not simply question of GDP। Ethiopia is a third of Pakistan's GDP। Uh, Egypt is not much bigger. In fact, in terms of population, it's about a half, less than a half। GDP is not much bigger than Pakistan. Yet, uh, both those countries have been invited to join the BRICS। So it is really quite concerning, especially given हमारे जो relationships हैं China के साथ। But you are to believe, given if you are to believe the given regime and the compensation, that Pakistan is in the ascendancy, that we have SIFC, we're getting investment from the Saudis, whatever that investment is. I think the light might be coming back. There might still be Let's hope light at so। the end of Let's the hope so। tunnel, Javed Keep the Sahab. fingers crossed। तो खैर एनीवेज, अब वो तो कह रहे हैं कि जी एसआईएफसी आपकी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल गल्फ स्टेट से प्लेजेस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनकी, तो ये तो ट्रांसफॉर्मेशनल फेज है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। Ali, I'd really like to believe कि ये है, or I'd really like to see hundreds of billions of dollars of FDI come in। I'd really want to see SIFC के बहुत successful हो, मगर जरा सा रिफ्लेक्शन करना चाहिए कि what has been promised और क्या डिलीवर हुआ। जब ये SIFC का इंसेप्शन हुआ था, जब शुरू हुआ था ये, तो उस वक्त बात करी गई थी कि सऊदी अरेबिया से एक्चुअली नंबर्स 100 बिलियन के थे, मगर अपेरेंटली अगर कट भी कर रहे हैं 50 बिलियन का शुरू हुआ था। 50 बिलियन, दैट वाज द स्टार्ट। दैट वाज फ्रॉम सऊदी अरेबिया। दैट वाज द मनी दैट वाज सपोज्ड टू कम, एंड इट वाज सेड ये बिल्कुल हो जाएगा, और सारे लोग बड़े खुश थे कि अब तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बड़ी एक फर्म फुटिंग पर हो जाएगी। उसके बाद वो टेपर डाउन हुआ 25 बिलियन, एंड उसके वो दैट वुड आल्सो बी वेरी गुड। देन इट केम डाउन टू 5 बिलियन, and the recent abhi jo baat hui MOUs, not even firm agreements or investment plans, of 2.2 billion, and we end up in the final picture, and this is literally the picture,
of the chief of army staff, the prime minister, and the minister of investment from Saudi Arabia, posing for the picture of investment by that Al Baik, which is a fried chicken franchise, which will be setting up shop in Pakistan. You know, it, Supposedly. it, it is kind of worrying. Then similarly, it was announced that $10 billion will be invested by UAE. There's no sign of it. Now, I think In we fact, really they're cutting your visa allocation. They're well, rejecting. I mean, if they had any seriousness, you would not imagine कि हमारे businessmen जो वहाँ जा रहे हैं उनको visas नहीं मिल रहे हैं, हमारे professionals को नहीं visas मिल रहे हैं. So I just don't see any sign of investments coming in. There's no real announcement by the Chinese CPEC part phase 2 का कि कोई बहुत बड़े projects होने वाले हैं. Moreover, we have a problem because of this electricity. कि CPEC के जो Circular debt projects हैं, tied into that billions of dollars. $2.8 billion or approximately thereabouts has not been paid. The Chinese are demanding payment for that. And You know, the IMF isn't allowing the money to be given from its pool to the Chinese as part of it. I think that is said, but I'm not too sure. That's one of the reasons I think we have not paid is we don't want to reduce our foreign exchange reserves, which have very, very gradually and slowly built up to about 10 billion or slightly above 10 billion. So I got 2.8 billion उसमें से दे देंगे, we'll be back to near about 7 billion. So this is a real problem. I mean, we are not on steady footing. The reality आप स्टेट बैंक के numbers देख लें, अभी उनके एक liquidity profile जो है liquidity arrangements का देख लें SBP के website पर, in the next 12 months are repayments due, and this is just debt. This is the sovereign liabilities in terms of debt. That is close to 30 billion. We need to pay 30 billion in the next 12 months. In just the next 3 months, it's about 4 billion. But after 3 months, it बहुत जल्दी से बढ़ जाता है. अब ये है कि They'll get another debt. They'll get another loan adjustment or something from. Well, I think hopefully about 15 billion of this will be rolled over, but it nevertheless leaves about 15 billion. ये कुछ IMF से आ जाए, कुछ World Bank, but we're really constrained. तो हमारी जो growth target है IMF के लिहाज से वो भी कोई 3.2% होगी. Remember, पाकिस्तान की population कोई 2% से grow कर रही है. अगर आपकी growth GDP growth बस 3.2%, तो क्या आप देखेगा in terms of खुशहाली? And now they have actually reduced the ये पहले जो इनकी थी जब ये SLA sign हुआ था with this staff level agreement जुलाई में, उस वक्त था इनका focus 3.5% in 25-26. The next year it was going to go up. Now they have reduced that forecast to around 4.3%. So effectively, if you're going to grow at 2.5%, 3%, 4%, it's virtually no growth. And there's a simple reason for that. Structurally, we are not ready to grow. We have a huge domestic debt crisis. We have हमारे जो capabilities हैं industry में, they are very inefficient because हमारे यहाँ बहुत promote करा गया है rent seeking class को, तो हमारी जो industry internationally competitive नहीं है, तो कैसे grow करेंगे? आप जब ग्रो करते हैं, जब आप competitive होते हैं, आप की इंडस्ट्री जो होती है वो मॉडर्न होती है, आपकी इंडस्ट्री में capable लोग होते हैं, it's by and large, if you see even IMF की रिपोर्ट है कि उसमें लिखता है कि टेक्सटाइल सेक्टर ने since last 30 years has not paid any tax. So वो तो खत्म ही हो गया ना एक तरीके. Textile sector has disappeared in the past few years as well in Pakistan. But you're saying capable log, so isn't your finance minister Aurangzeb capable? He's steering the ship and he's meeting people from the IMF, the World Bank. He's traveling. He's trying to steer the ship out of these rough waters. Undoubtedly, I'm sure he has the best of intentions. But for a start, he's a banker. He's not an economist. And we have to be very clear about that.
economist has a very different perspective to a banker. He sees the world issues in terms of liquidity crisis के जावेद कहीं से साहब, ये हमारे पास अकाउंटेंट, फैमिली अकाउंटेंट अगर फाइनेंस मिनिस्टर हो सकते हैं, तो बैंकर तो एक बैंकर स्टेप भी हो अप है सकते उससे. हैं, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक पॉलिटिकल मैंडेट होना बहुत जरूरी है. And there is the crux of the matter. Does the government have that kind of political mandate and legitimacy to do the kind of reforms that are going to be tough, which are some of them are going to be painful, which will carry the people along? Now, this year they were supposed to have brought in retail taxation. Abhi tak, in fact, in reality, koi retail taxation nahi hui hai. From the numbers I'm told, again, there's no formal numbers announced, but it's less than 10 million rupees, which is nothing. They were supposed to raise something like, I think 40 billion was the target for the year. Similarly, they have now delayed introduction of agricultural tax from the province till next year. अब next year होता रहेगा, देखेंगे कि होता है कि नहीं. So क्या structural reforms? जो taxation हो रहा है, वो is almost entirely on the same people. Tariff increases हो रहा है, वही लोग जो पहले tariff increase. अब मैं Overtaxed. आपको मैं एक example देता हूँ. There's a friend of mine. He's doing quite well, mashallah say, and he's in Karachi. His take home would be about, in Pakistani terms, about 7 lakh rupees, which is about US dollars, about $2,500, which is by Pakistani standards a very healthy salary. Okay, that's what. But last year, his electricity bill per month was about 50,000 rupees. This year, it is 120,000 rupees. So you have had a 70,000 rupees increase in his electricity bill. Now, that means 10% additional cost on his take home pay. So his ability to spend has dramatically reduced. There are other items where I can say similarly. So you might say the inflation has come down from a peak of 35% to currently near 10, 11%. But in reality, it doesn't account for the fact कि ये सारी जो factors हैं, लोगों की spending power खत्म हो गई है. So you might say inflation खत्म होगी, but by shooting everyone and making a dead city, you can bring down inflation to zero. जब कोई खर्च ही नहीं करे. Speaking of which, Law and Order एक वो list शाया हुई है. उसके अंदर Pakistan is I think 3 points from the bottom, just above Mali and Nigeria. So law and order, and also in terms of rule of law, and that is a very important index because it is rule of law, and we don't simply talk about the law and order situation, but how the legal structures work to protect your fundamental rights, your political rights, your legal enforcements of contracts. As someone who's lived in Pakistan for a long time, you know that the judiciary and the legal structures never existed in Pakistan, Javed Saab. Sorry to No, you're right, but they existed, but only in name and only in like these buildings with endless purchase and delays and deferments. Case अगर एक बार घुस गया अंदर तो फिर तो भूल जाएं आप. You would hope they move in the right direction at least. But unfortunately, it seems we are not moving in the right direction. And that is the worrying thing. There's a deterioration. जैसा भी था, at least कुछ तो था. अब वो भी अगर आप खत्म करते जाए, then you are really in trouble. When as an ordinary citizen, you have no confidence कि आपकी fundamental rights protect होगी, आपको justice मिलेगा, then you have real problems because that will affect your investment decision making. If there's going to be arbitrary rule making and arbitrary law enforcement, then anyone who is coming into this country will be very concerned. And I'll make this point. FT ka recently article tha, and I don't know if you saw that, about IPP contracts. And I'm very critical of how those IPP contracts were signed. They were, I think, on the whole, very unfair
to the Pakistani government and Pakistani people, but they were signed by the Pakistani government. The sovereign signed those. There was a sovereign guarantee. And Now, it backed off. according It to the reneged, and the Pakistani government just reneged on it. this, no, well, it's slightly worse. According, if one is to believe FT, the FT article says coercive measures were used to renegotiate the contract. Now, I can tell you what kind of message आप इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को भेज रहे हैं. आपने एक सॉवरेन गारंटी दी, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा, and then you use use coercive measures, and that is a worrying. And this is where I'm talking about rule of law is incredibly important. Anyone who comes to any country, India is not much better than us in many ways than Pakistan. मगर एक चीज जब भी मैं इन्वेस्टर्स से बात करता हूँ, मैं आई वर्क अब्रॉड, एंड वो हमेशा कहते थे इंडिया में एटलीस्ट एक लीगल फ्रेमवर्क तो है. इनफैक्ट इन सम वेज दे इवन थॉट इट्स बेटर देन चाइना, कि एक यू कैन ट्रस्ट, इट मे टेक टाइम बट यू कैन ट्रस्ट द लीगल सिस्टम. नाउ व्हेन यू स्टार्ट interfering with that and diminishing that, you really harm your prospects of getting investments. You will get investors probably, but the most shabby investors, the most extractive investors, the really good quality multinationals, they'll be very wary of coming to Pakistan. So yeah, but they are looking for, considering the initiatives that they've taken, including SIFC, going back to it, they're looking for a quick in, quick out. Well, those are the worst investors. What you want in this country, जो आप चाहते हैं कि आके यहाँ इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हों, कैपेबिलिटीज बिल्ड करें, आपकी ह्यूमन कैपिटल डेवलप करें, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें, आपकी ट्रेड लिंकेजेस बढ़ाएं. जो इन्वेस्टर्स वियतनाम गए थे और इवन इन चाइना गए थे, वो क्विक टर्न अराउंड के लिए तो नहीं गए थे कि जाए जैसा डिग करे, गोल्ड निकाले, गोल्ड को बेचा और अपना प्रॉफिट्स बनाया और निकल गए. If that will not really develop your country.